सितारे with Delnas, स्वाद और 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 सितारे with Delnas. हाय डोनल, कहाँ है यार? यार डेलू आई एम जस्ट रीचिंग. मैं बस देख ही रही हूँ. यू आस्क एनीबॉडी, लोखंडवाला में ऑगस्ट कैफे बहुत फेमस है भाई, इधर आ जा. या आई गॉट इट. Donal is a doll. Donal. Welcome to my show, Swad और सितारे with Delnas, and I'm so happy. I have to tell everybody that we did a show called Ek Deewana Tha, which was Donal, of course, was the heroine of the show, and I played a tantric, and it was amazing. so lovely. We got to know each other then, and बाद में तो हमारी दोस्ती बढ़ती गई and I think and you've been vibes. just so wonderful. So स्वाद और सितारे एक ऐसा शो है मेरा जहाँ हम सितारों के साथ खाना खाते हैं. Yo. तो ये लो भाई खाना, ये My देख God. लो. This is. Did you get the place मैंने- properly? Because you were asking कहाँ है. It's the I most think famous cafe. I know it is. August Cafe is very famous, but I have been to August Cafe. I think Bandra side में. Bandra में भी है, यहाँ भी है. मुझे नहीं पता था ये वाला. Yeah. So I've been to Bandra. So yeah. It's like where So it you is. see what you want to eat. I मैं hope तो you. मैं- I No, hope. I am not non-vegetarian anymore, Delu. I have turned vegetarian because I feel कि मेरा cholesterol level बहुत बढ़ जाता है, and I have been avoiding a lot of food these days because I am on diet because I cannot work out too much. कहाँ So I गायब have- हो जाएगी? कौन सा डाइट? क्या डाइट भाई? अरे और मैं इतनी क्यों? मतलब मेरा कोर्टिसोल लेवल इतना बढ़ गया था ना, so that is why. So you're vegetarian? No. Hey Bhagwan, let's scrap this episode. Let's just scrap it. Let's end it here. We don't want to have her. जो लोग मुझे पता है वेजिटेरियन, तू तो खाती थी यार डोलन. मैं खाती थी. We remember we have eaten. Yeah, we have eaten so many lunches together. I on think set. you अरे love non-vegetarian यार. too much. You love non-veg. I know you're a Parsi. तो मैं तो नॉन वेज I know. खाऊंगी. अच्छा भाई आप सजेस्ट करिए क्या. So, here are some recommendations for you. Okay. Butter up gnocchi is our best pasta. Alright. Bolognese So you have to get some veg and some non-veg Yes. so that we can try both. So butter up gnocchi contains egg in it. Little bit of egg chalega. Egg is good. Egg is good. Madam has said egg is good. Okay. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Yeah, Fine. egg Yeah. is good. Egg is good. Okay. Avocado. This is available in both veg and non-veg. So vegetarian is. तो भाई मेरे को सिर्फ घास फूस नहीं खाना है यहाँ के. इनको non-veg दो, मेरे मेरे को को- veg दो. हाँ, हाँ. And what will you drink? I can have cranberry juice. Cranberry juice. You are meeting me after a Cranberry long juice. time, dear. Things have changed. बात तो सही है. Yeah. ये क्या है? So starting with the butter up gnocchi This is that little bit of egg that you say. Egg, okay. and your citrus avocado salad. Garden veggie salad. This is the citrus avocado salad. This is for me. नहीं, ये भी मैं खाऊंगी. क्यों दिस फॉर मी? अच्छा. और ये इसमें थोड़ा सा जो भी है. Tulsi malt tea. क्या थी? Tulsi? Tulsi malt tea. तुलसी Malt tea. Tulsi It's a Mal Hindi tea. name. Tulsi Mal. Is it? Or any of them? Oh wow. Mal Oh is wow. good, not Oh Mal. wow. Is it? It's amazing. ये क्या है इसमें? There are star anise, clove, and pepper. Just have it. Just have Is it. it? Is it that Just good? have it. बहुत अच्छी है. If you like the Indian
version of spices. Yeah. too good. It's like kava, है ना? कावा से भी बहुत बढ़िया है भाई ये. हाँ. ये मैं इसकी रेसिपी लूंगी और मैं घर पे बनाऊंगी ये. ये हुई ना बात. You make good food. I've been to your house. Please have. Yeah. Chai is good, yeah. सर गरम है, तुम कैसे पी रही हो? I love garam chai. मैं this तो is water I डाल love के पीती garam हूँ. chai. हाँ जी. Sorry. avocado pizza. Lovely. Avocado Lovely. pizza. Base of Looks the pizza nice. is ragi base, Ragi. topped up with guac, cherry tomatoes, olives, and a healthier side to it, plus gluten free and vegan. Full stop. ये मैंने इसको क्यों बुलाया यार? गजब बेइज्जती है. ये है avocado, cherry tomatoes, olives, Yes. and ragi based. The crust is ragi Ragi based. base. And gluten I think ये यही खाएगी. ये वेजिटेरियन को दो. मेरे को नॉन वेज लाके दो कुछ. लगता ये पागल हो गया. You can smile. Yeah, I am smiling. This is actually something very different which I have never had before. Ragi के base के ऊपर avocado, it's really nice. A nice touch. है ना? Nice touch. No, I take my words back. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. The entire concoction, you know, is very unique. I feel the USP is the avocado on. Yeah. And a little spice as well. It has that And after crispy spice. and crunchy है. Crispy crunchy है ना? Yeah, yeah. वो मजा आ रहा है. Otherwise healthy base नहीं होता ना. It's always of मैदा ना. ये बहुत अच्छा है. I take my words back. Non-vegetarian, Parsi eating, ragi based avocado. We are happy to hear that. मजा आ गया. मजा आ गया. मजा आ गया. Okay, this is Oh, chicken. lovely. थोड़ा सा खाएगी क्या? You can try, right? ऐसा This तो is मुझे the पाप नहीं लग जाएगा. full chicken sandwich. Yeah, it's not for any religious reason, हाँ right? हाँ You नहीं just नहीं. by nothing. choice. Yeah, because just because of the cortisol level So मुझे have- ऐसा लगता है. I तो just एक have दिन bread. में कुछ नहीं हो जाएगा. कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होगा. उतना मैं थोड़ा It looks yummy. मैं साइड से खा. इसको भी इतना खाएगी तोड़ के. हाँ. मैं बस टेस्ट के लिए खा रही हूँ. Okay. Because I don't mind tasting. But still. इनको बता दूं, फुल सैंडविच ऐसे खाते हैं. अच्छा ठीक है, समझ गया. grilled chicken patty burger, our most selling product. Is that? The best selling product, you mean? Okay, guys, so this is the best selling product at August Cafe. Donal, I'm sorry, but हम वेज भी मंगा सकते हैं. बट okay. ये बेस्ट सेलर लेके आए हैं ये. दिस इज अ चिकन बर्गर एंड आई हैव नेवर ट्राइड दिस. Never tried this here. I've tried the other things. I think I will take a bite and see how it is, you know, because अब पेट में जगह भी नहीं है. Actually बर्गर की हमने तो कर दिया है उसको. Yeah. This is our chicken burger जिसका मर्डर हो चुका है. But let's just try this. डोनल एक पीस ले. मैं- इतना ले ले. इतना ये ले. ज़्यादा हो गया. अच्छा, जितना रख दो खाना है इसको. उतना ले ले. हाँ, हाँ. I would love to try. मुझे ना बुफे बहुत पसंद. तो I like to taste little bit of it, just for the taste of it. Usually lamb burger होता है, mutton burger होता है, you know, like hamburger. हाँ. But chicken burger tasting so awesome.
So yummy. Oh my god. Everything is just fab. Not because we are sitting here, but just have it यार. थोड़ा सा खा ले आज. मैंने मुझे इससे पहले वाला वो था वो ज़्यादा इस वाले से टेस्टी लगा. I find both. दोनों के Yeah, टेस्ट. yeah, इसमें ना veg- इसमें non-vegetarian. मस्टर्ड है. इसमें हाँ, मस्टर्ड है. कुछ That's why different है. it gets a little different. And the filling is this is just This tastes outstanding. different. You have a cook. वो मॉर्निंग में आती है वो मुझे लगता है मैं उसको ज्यादा हेल्दी ऑप्शंस बताती हूँ कहती मैडम कुछ तो खा लो वो सीख रही है तुमसे. Healthy. वो सूप बनाने को मैं उसको बोलती हूँ तो 4 लोगों का सूप बनाती है. कहती मैडम क्या होगा आपका एक बोल सूप से आप कुछ नहीं खाते हो आप 4 बोल सूप पियो. मैंने कहा इट्स टू मच. सो ऐसा सब हेल्दी ऑप्शंस में उसको Good यार. तो you cook हाँ Donal. You properly cook. I don't cook. I have a cook. She cooks it for me. हाँ but I don't cook. तू बनाती है इसलिए तो you can show her different things ना. नहीं मैं उसको सिर्फ बताती हूँ. मैं उसे सीखती हूँ. She comes like 7 around in the morning and बीच में वो छुट्टी पे चली गई तो मेरा ऐसा हो गया because बीच में I was eating when you have little higher cortisol stress Yeah. levels and all that तो आपको खाने का बहुत craving होता है. बीच में I was actually eating because the food because you need that recovery Yeah, also for your food so you want to eat more. Yeah. तो वो साउथ इंडियन बनाती थी बहुत अच्छा Wow खाना. यार. सो वो चली गई 2-3 दिन की छुट्टी पे आई वाज लाइक अरे क्या मैं बना लूंगी ना क्या फर्क पड़ता है. उपमा आई लव हर उपमा. तो अभी आई हैव आस्क्ड हर नॉट टू मेक उपमास. तो मैंने कहा उपमा ही तो है मैं बना लूंगी एंड आई वाज लाइक चलो सुबह मेरे को भूख लगी तो मैंने कहा चलो उपमा बनाते हैं रादर देन जस्ट ऑर्डरिंग फ्रॉम स्विगी एंड ऑल दैट. मुझसे नहीं बना एंड आई एक्चुअली वो टीयरी आईड बिकॉज यार इतना सिंपल चीज़ मुझे नहीं आता बनाना. नेक्स्ट डे जब वो आई मैंने कहा मैं उठ गई भाई 7 बजे कि चलो मैंने कहा आंटी आप मुझे बताओ कैसे बनाते हो. आई लर्न दैट. और अब वो कभी एक आध दिन की छुट्टियां तो चाहिए होती हैं So, सबको. for एंड me- व्हेन आई गो होम आई कुक इट फॉर माय पेरेंट्स sometimes you know. So for me also na I know basics but I can't do elaborate stuff. It looks This great. is the creamy pesto pasta. चंकी याद आ गया मुझे. क्या था उसका? Mamma mia. हाँ पास्ता. कौन सा पास्ता? Some pasta. Mamma mia something. अरे बताओ ना आप लोग क्या था वो डायलॉग आप लोगों को पता होगा. आखिरी पास्ता या आखिरी पास्ता. आखिरी पास्ता. Oh. This is. Oh. Woo. Okay. Sugar. It's nice. मैं पता है क्या करती हूँ चॉकलेट्स या बिस्किट्स या ऑल दिस जंक फूड ना अगर घर पे आएगा तो मुझे वो खत्म करना है तो आई हैव मेड श्योर कि मैं घर पे लाऊं ही ना. Yeah. दिखेगा तो मैं खा लूंगी. Everybody, Food yeah, craving yeah. and sweet But craving. you know, I'll tell you, Donal, this place now, their food cafe. I actually want to say this to people. When you go to cafes, you in your mind, I think एक चीज होती है कि हाँ ठीक है चाय कॉफी थोड़ा सा snacky types थोड़ा कुछ. But the food being so good, so delicious and so unique, everything now you see this is like the flavors are just something else. So you know this is sir This is एक really second इसमें क्या है? That is creamy pesto. There is pesto, cream, Parmesan cheese, spaghetti, and as you see, topped with almond flakes. Yeah. And cherry tomato. So what is that little different taste किसका आ रहा है इसमें? Because see like the chicken pulled sandwich, Right. I got a strong taste of the mustard. Yes. That made the difference. Yes. In the burger, it didn't seem like a chicken burger to me. It was like as if I'm having a burger in New York, to be very honest. Fantastic.
Okay, now here there is something कुछ अलग ही है ना कुछ. I love. Each dish सबसे has to ज़्यादा be मुझे different, अच्छा right? लगा. Yeah. There has to be some sort of element into each to make it stand out And the from the Yeah. cream in the other this. parts. There's some kind of a cream which is making it more Yeah. tastier. Yeah. And yeah, we take an effort to cook it together all, on a slow temperature to get that creaminess out. I know. I must tell you, खाना एक टेस्टी होता है, Yeah. वो तो होता ही है, Yeah. यमी होता है, और एक खाने में हाइजीन और फ्रेशनेस होती है जो हमें हमेशा ऑगस्ट कैफे में मिलती है. थैंक यू सो मच. Thank you. I mean, we take efforts for that. If I were to rate this place, I would rate 5 out of 5 because it's not the first time I'm coming here. Many, Help us many. out. Shout it from the rooftops. We'll be happy for that. 5, 5, 5. African peanut sauce bowl in cottage cheese. African looks peanuts. nice. Peanut sauce bowl. African peanut sauce bowl with cottage cheese. Kamal. Really looks nice, huh? It looks damn good, huh? Bas, bas, bas. Yeah. This quinoa. Take things from this. Like broccoli. Tasty. I love broccoli. Me too. I can't eat so much of broccoli, cauliflower. I have thyroid. तो थायराइड में ना ब्रोकली नहीं खानी चाहिए, कॉलीफ्लावर नहीं खाना चाहिए, कैबेज नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें मना है. ब्रोकली में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है. इट्स वेरी वेरी हेल्दी फॉर यू. ऐसा. Keeping space for dessert. Oh my Oh my God, God. what is that? Oh my god. इसमें वो तो नहीं है. This is whole wheat Oh. and chocolate chunk cake. Okay. चलेगा. This is whole wheat, orange, chocolate. And chunk cake, and this is your Chunk keto cake. fudge cake. This is a fudge cake. Keto fudge cake. Keto lovely, fudge cake. lovely. तो इसको दोनों ही खिला दो. नहीं, keto is better for me. Oh, let's taste this. My God, it's so. इतना सॉफ्ट है. Lovely That ना? mix of bread जो side में है ना, the wheat and all. The and orange the cream. Orange का it's so soft. It's so soft. Chocolate and that sponginess ना. I love that. मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, but this is more healthier. हाँ, मुझे taste करना. Oh, even मुझे this is. ना, मुझे मीठा और ठंडा, सॉरी, गरम और ठंडा, सॉल्टी एंड स्वीट, ये कॉम्बिनेशन मुझे बड़े पसंद है. मुझे गुलाब जामुन विद वेनिला आइसक्रीम, I love it, like hot and cold combination. Like brownie and ice cream like that. I love it. आप इधर आएंगे एक मिनट, मुझे एक चीज बताइए. This is keto, right? Yes. Keto. So how is it just so sweet and just perfect? Like I'm having a gooey chocolate cake, So like a normal gooey chocolate the cake. sweetness is coming from the keto sugar, that is xylitol, which has been added to it. Keto Okay. sugar. Keto sugar क्या हुआ? Keto sugar is xylitol. It's not Xylitol. It's a new ये term. तो चलो ठीक है, समझ में आता है. There's a normal cake, but इसका जो कीटो का हमेशा एक weird सा एक taste आता है, right? When you have anything to do with keto, like a, Keto is basically fats. मतलब कीटो डाइट में क्या होता है कि आपको कार्ब्स कम करके फैट ज्यादा करने वो हैं. समझ में है. हाँ. But when you are having a dessert, which is a healthy dessert, there's always something which is missing. Then ये इसमें nothing is missing. No, not at all. perfect है ये. हाँ.
I loved it. I love food and meeting Delu after a very, very long time. And it was just an impromptu kind of a thing. Yeah. She just called me up, ki chalo milte hain. And this is what she was doing. And This for is her, the purpose of this show. Yeah. Meeting up with old friends who have achieved, obviously, in their own way. You know, they've achieved something in life. They're all my friends, and meeting up with everybody randomly, just like this. एक call किया और डेलू के लिए सब आ जाते हैं. And friends, yeah. Friends are yeah. for what? Like, this is a very small And then industry. खाने पीना, खाना पीना, ऐश करना, मजे करना, मजे करना, बातें करना. Okay, guys, can we have the small gift from there for Donald? Donald, this is a small little gift for you. I would like to thank Meraki Gifts by Niharika for being our gifting partner for the show, Swad or Sitare with Delnaz. And this is a small thank you from Thank our you. side, from my entire team. Thank you. Lots of love to you, Donald. Thank you, Donald, for coming over, and it was a pleasure having you on the show. बहुत मजे आए, हमने बहुत बातें की. Guys, just in a few days, we will have yet another Sitara with Swad. Lots of Swad and Sitara on the show called Swad or Sitare with Delnaz. So stay tuned, and Donald, please, if you can just tell your fans कि भाई like कर दो, subscribe कर दो. अरे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपको ये एपिसोड कैसा लगा, एंड डू फॉलो स्वाद एंड सितारे बाय डेलनाज. Thank you, thank you. Like, share जरूर करना. Bye. See you all. इस हफ्ते का स्वाद ठीक से चखा क्या कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन. डोनाल्ड और मैंने किस सीरियल में साथ में काम किया? नेम द शो इन विच डोनाल्ड एंड मी वर्क टुगेदर. जल्दी अपने जवाब इस ईमेल आईडी पे भेजिए एंड बी ऑन द शो नेक्स्ट सीजन विथ मी, स्वाद और सितारे विद डेलनाज. But I knew that Apara and her Chandlo, Apara and Shining, इतने मैं पर आके बात नहीं. I know, it's so nice you're looking. जहाँ दूध की नदियाँ ला 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 मारे